तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि भारतीय फौज ने कश्मीर में 20 से ज्यादा अफराद को शहीद किया। कश्मीरियों का हौसला तोड़ने के लिए नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादतों पर दिली दुख है। फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के हामी हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना था, that Indian attempts to label the legitimate Kashmir struggle as terrorism cannot deter the valiant people of Jammu and Kashmir from their demand of exercising the right to self-determination enshrined in the UN Security Council resolutions. The Prime Minister also stressed the need for the international community to urge India to allow access to the fact-finding mission of the Office of the High Commissioner for Human Rights and the OIC Independent Permanent Human Rights Commission to Indian occupied Jammu and Kashmir. 6 अप्रैल को यौम यकजहती कश्मीर मनाने के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, Friday, the 6th of April, that's tomorrow, will be observed as Kashmir Solidarity Day in Islamabad, and this would also be observed all around the world by Pakistan missions abroad. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा, Pakistan condemns the use of force by Israel against defenseless Palestinians, resulting in the death of several Palestinians and injuring many others in Gaza. Pakistan calls upon the international community to put an end to the blatant use of force and flagrant violation of human rights of the Palestinian people. Establishment of a viable, independent and contiguous state of Palestine on the basis of internationally agreed parameters, the pre-1967 borders and the Al-Quds al-Sharif as its capital, is the only sustainable guarantee for peace in the region. अफगानिस्तान में मदरसे पर बमबारी के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर फैसल का कहना था, We do not comment on the internal matters of any other country, but the incident in Kunduz, in which innocent children and large number of civilians were martyred as a result of airstrikes on a graduation ceremony in a madrasa, is deplorable. In our view, it is important to make conscious efforts to avoid any such actions that are detrimental to peace and reconciliation efforts in Afghanistan by all of us. यह है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।